Hello everybody, this is me Ozan Khan and welcome to yet another exciting episode of Sunday Unscripted. आज का शो स्पेशल होने वाला है, बल्कि मेरे हर एक शो स्पेशल होता है, आपको पता है, आप एंजॉय कर रहे हो और मैं पैंक रहा हूँ आपके लिए मज़े के एपिसोड्स. लास्ट एपिसोड ऑफ BCW where I took over the backstage and you guys loved it. I'm going to start modeling very soon by the way. लेकिन उसके साथ साथ आज हम यहाँ पे मौजूद हैं on the red carpet of Borderless World. Now what is it? It is an album launch of Atif Aslam after 7 long years. Bro, I've been waiting for this day for so long. लेकिन इसके साथ साथ he's also launching our exclusive platform for singers and you know उसके बारे में बाद में बताएंगे क्योंकि मुझे भी खुद इतना ज़्यादा नहीं पता उसके बारे में because it's a surprise element in the business. Now I'm here at the red carpet. मैं भी आराम से रेड कार्पेट पे वॉक करता हुआ जाता, तस्वीरें लेता, शुष्के मारता, इंस्टाग्राम पे मतलब अपने इंस्टाग्राम पे डालता, लोग कहता, फिर आतिफ को सुनता और वापस चला जाता. बट मुझे आपकी फ़िक्र होती है कि आपके लिए कुछ एक्सक्लूसिव, कुछ मज़े का, कुछ एक्साइटिंग लेके आना चाहता हूँ मैं आपके लिए. और वो ये है दैट रेड कार्पेट मैंने सुना है कि आज बहुत सितारे वॉक करने जा रहे हैं और हमसे मुलाकात भी होगी, तो क्यों ना वो मुलाकात मैं आपके साथ शेयर करूँ. सो आज का अनस्क्रिप्टेड ऑन द रेड कार्पेट बिकॉज आई एम टेकिंग ओवर दिस रेड carpet. So guys, I told you that I'm taking over the red carpet of Borderless World. So ये है हमारा स्पेस जहाँ पे सारे सितारे ऐसे रेड कार्पेट वॉक करते हुए यहाँ पे आएंगे और फिर हम गुफ्तगू करेंगे. तो आगे कोई मज़े के सवाल है जो मेरे तक पहुँचे हैं तो वो मैं पूछूंगा और देखते हैं जवाब क्या आते हैं. कुछ कंट्रोवर्शियल भी हो सकता, मैं बोल नहीं सकता, हो सकता है, लेकिन हम गपशप लगाएंगे. पुराने दोस्त है, जब मुलाकात होती है गपशप लगती है, मज़े आते हैं, तो वही मज़े करने आए हम. और मैं कैसे लग रहा हूँ ये मैं पूछना चाह रहा था आप सबसे. Thank you Ismail Fareed for such an amazing outfit. Guys, we have the amazing Faris Shafi here with us. Sir, you look stunning, but you're not in your usual, dhoti and kurta. It was a bit cold. Oh yeah. It was a bit cold. Fashion should be also sustainable according to the weather. So are you Atif fan by the way? Of course. Huge one. Huge Atif fan. कौन सा गाना है जो you can't stop humming or like Yeah, I have a deep association with his first album. Okay. So वो पूरी एल्बम ही मेरी बहुत फेवरेट है. Amazing. His first solo album है. So आपका कोई मज़ेदार गाना आ रहा है because हम तो आपके गाए हुए गानों से नाच के थके इस वेडिंग सीजन to be very honest. Any other hits coming along? यार हिट्स तो लोग बनाते हैं. तो मैं आपको प्रेडिक्शन दे रहा हूँ on camera it is gonna be a hit. आप निकाले तो सही. That's kind of you. Thank you. हम निकालेंगे और आप उसे हिट बनाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा. और आप हमें इस तरह एंटरटेन करते रहे. And by the way, we were talking behind the camera that he has crazy ass fans. That's true by the way. I've seen, I've encountered them personally. Yeah. अच्छा. Are you one of them? Yeah, I am. Oh. Forrest! Like that. Thank you so much. Forrest. You're welcome, man. And You're see you welcome. inside. Okay. So, Aisha Shafi, we are here on this amazing event, which is Atif Aslam's Day. I would say it's the Atif Aslam Day. 7 years, and the album is now releasing. So Wow, it took them 7 years to make this. Wow, I that's don't big. know. That's some information I don't have, but like they told me, the album is releasing after 7 years. So Okay. मैं थोड़ी सी हाइप अप कर रहा हूँ. पैसे भी वसूल करने हैं. So कैसे आतिफ के फैन हैं both of you? Oh, absolutely. I mean, not just a fan. Like Aisha और मैं तो literally like we follow him. We try to go to every single concert of his, चाहे वो पाकिस्तान में हो या बाहर हो. And most importantly, आतिफ भाई से थोड़ी सी जब से हेलो आय होना शुरू हुई है उसके बाद से तो I'm even a bigger fan because the human that he is, he's very special to me, man. He's very Any one special. song. Oh, दोनों का favorite everybody rock has been selection. asking us this. Yeah. Everybody Same. has been asking us the same thing कि आतिफ भाई का favorite song सुनाए. मैं चार दफा सुना. हम 4 दफा सुना चुके हैं. आप किसी से भी ले सकते हैं वो footage. अच्छा, okay. एक गाना है कौन सा वैसे? यार आदत है, पहली नजर में है, कुछ होता है. वैसे to be very honest, that's my favorite. There's so many songs. I mean, like, which song of
Currently, yeah, I love हाँ लैला See, जो I feel कि आतिफ हमारी ज़िंदगी का इतना करीबी हिस्सा बन गया है, चाहे ब्रेकअप हो, पैचअप हो, खुशी हो, गमी हो, आतिफ साथ साथ ही रहा है। सही बात है Right? आई एग्री विद यू कम्प्लीटली मुझे अच्छी तरह याद है कुछ होता है कि कुछ होता है कह रहा हूँ कुछ इस तरह कि बहुत ज़बरदस्त मेरे पास स्टोरी है मेरे दोस्त हुआ करते थे उनका एक नया ब्रेकअप हुआ लाइक 8-10 दोस्त ना वो कमरे में बैठ के सारे कुछ इस तरह सुन रहे हैं तो मैंने कहा कि यार इसमें लाइक इट्स जस्ट अ सॉन्ग वो कहते हैं यूं करके ना दीवार के साथ टेक लगा के एक दोस्त बैठा हुआ था विद हिज थंब ऑन इज लाइक you will never understand the pain that I'm going through right now and Really understood when he had a breakup. I never had a breakup. What do you mean? सारी expose आज इंटरव्यू खत्म इंटरव्यू Thank you. We have the amazing Shagir. How are you? I'm good. How are you? Glad to see you. Likewise, likewise. I really wanted to come to the core musical. It Oh, was yeah. so stunning. I could sense it. Like it was amazing. We're gonna be doing reruns in January, so you should definitely come to that. Coming because there was BCW clashing, so we had to be at the fashion. Oh yes, that I was- remember. Oh my God, But yeah. you did a fantastic job. You're trying out acting as well. Thank you. think. I mean, yeah, I just wanted to try something new. plans हमारे पास. अभी कोई plan तो नहीं है, but like Fatma came to me with this project, and I just thought it's something new and Yeah, I just- exciting. exciting, I'm yeah. glad that we are moving towards the revival of stage again. Yeah. That's very important. Shay, it's Atif Aslam's day today. He's a humongous superstar, Yeah, rock star. definitely. आपका कौन सा favorite गाना है आतिफ का? Which you like can't stop humming. I mean, बहुत सारे हैं, but like I feel like Adat is like the. I know this is very cliche, Yeah, that's but it. it is. I feel It like has that song. I grew up listening to that, so I would like to go with बहुत that. breakup, बहुत patch-up, आतिफ fake ही है, you know? and Yeah, like, yeah. Like, he is that kind of. Any future collab happening with Atif? Not yet, I but- really want to see both of you collab. Like, I know. I would love that On a too. song. Not yet, but hopefully soon, inshallah. so any I'll new projects try and- for you? Yes, there is. I don't know if I'm allowed to say, but like before Ramzan, She is hopefully. allowed to say it's okay. before Ramzan, hopefully. Yeah. So see you again and again and again. And Yes, I really want inshallah, you to see inshallah. on the big screen as well. Like in Yeah. Okay. Oh my God. Wow. Singing and dancing and doing every single thing. Thank you so much. Thank you so much. Guys, we have our cover star for like 2 covers, basically Sunday and TGIF. And Nida is here. Nida. Hello guys, Assalamualaikum. Leather jacket and a dress, and she's all up for like fashion के लिए आ रहे हैं. Right? So today is Atif's day. Yes. Any song of Atif that you can't stop humming? तेरे लिए हाय, तेरे लिए उस पे तो मैंने इतनी वीडियोस भी बनाई हैं that went on and on, so I love that song. I love Atif Aslam. I'm so excited to be here. सेम मैंने अभी ये अपनी ऑडियंस को यही बोला था कि हमने कितने ब्रेकअप कितने पैचअप Exactly. कभी माँ ने कुछ बोल दिया बाप ने कुछ बोल दिया आतिफ लगा लो Atif, and I'm so excited because I feel like I know every single song, सेम so I'm ready to like मैंने sing. ये इंट्रो मैंने कहा आज because I have an interview with Atif as well. It's an exclusive one. Watch out for that too. So I'm gonna do Dil Diya Galla. Hell yeah, hell yeah. I'm word playing right now. Yes, yes. I'm so glad to see you. Likewise, and likewise. soon let's do something exciting. Done, Again, inshallah. नया साल है. नया साल. 2025. 2025. Let's do it. And I love the green suit. What's going on Thank you, there? Ismail Farid. I love you. Thank you. Guys, we have the stunning. मैं amazing singer. He is amazing singer, amazing musician, performer, हर चीज. लेकिन style, भाई हमेशा चला Endless. Okay. So what? मुझे लगता है कि जब आप अपने लिए अपने आप को खुश करने के लिए कुछ करते हैं वो अच्छा ही होता है That's true. मैं अपने लिए तैयार होता हूँ by the way. और आप हमेशा ही अच्छे लगते हैं Thank you. अच्छा सुपरस्टार है और एल्बम भी आया. Yep. Stunning album. I love the song with the I'm a Week. Honestly, the collab. Oh, thank you. And it's Thank in my loop on my Spotify. Thank you. I love it. कैसा लग रहा है? Like you have also been out there. Because मुझे पता है मैं एक चीज़ यहाँ पे mention करना चाहता हूँ. I used to go to I was in 7th or 6th grade और हम स्कूल जाते थे तो आपके गाने लगे होते थे इस्लामाबाद में. We used to Okay. like pitch in and गाने और हमें allowed नहीं था गाने सुनना मतलब Okay. हॉस्टल्स. So आपसे दिलदारी उस ज़माने की है. हम बताएं. और सोच लें एक तो आपने खड़े खड़े मुझे अपने से बहुत बड़ा भी बता दिया है which is alright. I was also I'll tell you I'm 36 by the way. 10 years. He's 36 years young. Yeah, 36 years old. यार एक्चुअली अच्छा मुझे ये लग रहा है इस टाइम पे कि
म्यूजिक सीन जो है वो काफ़ी एक्टिव हो गया है। That's true. I'm loving के कॉन्सर्ट्स का सीन भी चेंज हो रहा है। I'm loving people are coming out to enjoy, to celebrate music. इससे बेस्ट टाइम नहीं हो सकता और म्यूजिक करने का। एंड And I'm glad that आतिफ को सपोर्ट करने भी बहुत fraternity, बहुत musicians आए यहाँ पे genuinely. I mean, come on, Atif is ours. Like मैं आतिफ का fan हूँ. I'm not here as a सारे- Bilal सारे fan हैं, हाँ. Saeed, but Atif is one of the people who actually inspired me to make music. Because he was like a hope for people like us जो कि musical background से नहीं आते ना, तो हमारे लिए Atif was like यार, he did it, we can do एक it. गाना आतिफ का जो आपको बहुत पसंद है। एक गाना जो मुझे बहुत पसंद है, अब तो आदत सी है मुझको ऐसे जीने में, कोई ऐसा दिन नहीं होता जब मैं ये लाइन नहीं गाता। हाय हाय। अब तो आदत सी है मुझको। Thank you so much. Thank you. Thank you, man. And see you. See you. So guys, we have Natasha Nurani. How are you, Natasha? I'm well. How are you doing? I love your songs. Thank you. It's so soothing, amazing, and I really love seeing you here, like supporting other artists. Atif hai. How can we not support Yeah, Atif? exactly. Atif is not an ये other बोलने से artist, पहले yeah. Atif असलम है. As if he is the artist, Yeah. and we are all trying to be blueprints of him. That's true, that's true. But no. Any favorite song? I will say Ehsaas from Jalpari is my favorite. मैं एक फर्द हूँ या एक एहसास हूँ. I mean, like, what a existential crisis. So one word for Atif. What is my artist's favorite song? I do keep on thinking, यार ये वाला भी, नहीं ये वाला भी. Yes, ये yes, वाला. yes. So it's not the one that we can stick. There's one for हर- every era of our lives and his life. Exactly. That's the So beautiful glad thing. to see you here, Thank and I'm you. excited for Atif's. Oh my God, I'm so excited for this. So Same. I'm really See you looking forward. inside. See you Thank you so inside. much. Thank you. So guys, we have our absolute favorite, by the way. मैं नाम नहीं लूँगा, आप सब guess कर चुके हैं. It's a frequent thing. I love it. I'm standing with my favorite also. Thank you so much. I'm gonna cut this clip and I love post it on because that Instagram. was- So Atif. Imad, the show that we are doing right now is unscripted. The first episode we done it with the OG. So now it's become a thing. Oh yes, One after the other. yes. That's why I'm so comfortable speaking to you. Otherwise, so I stumble, I stammer, and I lisp. huh? He's just joking. He's just joking. He's amazing. Acha, today's Atif's day, obviously. Any Atif Great. Aslam Thank you so favorite much, song? guys. Thank you. Oh, there's so many. His You have to first. sing it also. Like, His first album was mind-blowing. Bhigi Yaadein, Yakeen, Mahi Way, 2, 3 I'm missing. Massive hits. Yeah. And it defines that era. 2004, 2005. Breakup, Yeah. patch up, हर चीज में आतिफ के साथ, आतिफ को साथ लेके चले. Absolutely. I mean, अभी आपने उन गानों की बात की and I've gone back into that era, and it's absolutely fantastic to see Atif I agree. doing what he has been doing for the last 2 decades now. And it's been like the album is coming out in 7 long years. So I'm totally like super excited for the album. So am I. I just told him I'm really looking forward to be hearing it. Yeah. And he's going to perform here tonight. So Yes. excited. Yes, Thank yeah. you so much, Imad. Thank you so much, Ozan. Lovely speaking to you. Again, unplanned. I love that. Very Yeah, nice. lovely speaking to you. Thank you. Which Thank you. song? So guys, we have Asfar from Bayan, my favorite band to be very honest. ब्रांड भी बन गया थोड़ा Brand भी बहुत. बन गया, हाँ, brand तो बनता है. Asfar, I love your song, Mehram. I love it. I listen to it every single time, and not just that, Nahi Milta. I think it's Thank a you, gem. man. You made it an amazing song. You guys did a fantastic job. Thank you. कैसे हैं आप? यार मैं सेट पहले इंट्रोडक्शन मैंने शुक्र कहा है। ये जरूरी है. यार ये ज़रूरी था. ये बिल्कुल ज़रूरी है. बिल्कुल बिल्कुल यार अल्हम्दुलिल्लाह. I'm happy, I'm doing well. Yeah. बैंड अच्छा काम कर रहा है. We just released our new album. बहुत मेहनत की उस पे. उसके गाने अप्रिशिएट हो रहे हैं. अभी ट्रेंड कर रहे हैं गाने और चार्ट्स में ऊपर जा रहे I हैं. was amazed that Nahi Milta when came out like 4-5 years ago. It came out 10 years ago. 10 years ago. Yeah, I yeah. heard that, and that day onward I loved it. But उसके बाद it became like a thing after so many years. So, yes. अच्छा काम कभी नहीं वो जाता, जाया नहीं जाता. ऐसे ही है. जो चीज़ आपकी एक तरह से जो एवरग्रीन चीज़ होती है ना, वो टाइमलेस चीज़ जो होती है, वो इवेंचुअली उसको पजीराई मिल भी जाती है एंड देन इट लास्ट्स. यू नो, तो वो रहती है चीज़, तो फौरन आके ख़त्म होने वाली चीज़ नहीं है. तो हाँ, ये सीन So है today's Atif's Day. Any Atif Aslam Yeah. favorite song? यार. ऑल ऑफ हिज अर्लियर सॉन्ग्स आई वुड से, जो उनके एल्बम के थे, जो उनके शुरू के जलपरी के और बाकी बाद की एल्बम्स के, सारे फेवरेट्स हैं.
We've grown up listening to them. Amazing. Thank Yeah. you so much. Thank you for so your much, time. bro. So guys, we have a designer, amazing designer. Personally, I love her clothes and I love her works. Sara is on here. Sara, आप कितनी प्यारी, आप खुद modeling क्यों नहीं करती वैसे? so Why do you invest so much money into actors and models and stuff? You can do it yourself. I think we should just stick to what we can do. But you can do that. And You are let killing it here. The professionals With this- do what they do. हमारे frames काट रहे जी आज, कोई बात नहीं, हम continue करेंगे. But you're looking stunning by the way. Thank you. It was a fancy event. I had to be fancy. I think just we got the memo, not anybody else though, on the red carpet because I've seen some disaster looks. I'm Adnan's +1, so Adnan's always fancy, so I had to be. Yeah, that's true. That's true. Thank you so much. And are you Atif fan? I am a huge Atif fan. Same song. एक song जो आप हमेशा you love to sing. The sing, like I sing, not sing, not but listen sing, to but it, listen to is the one and only Coke Studio. Yeah, ताजदार हरम. ताजदार Yeah, different बहुत सारे गाने हैं. मैं तो personally दिल दिया गल्ला के बारे में मेरी सुई अटकी है आज क्योंकि सुबह से ही मैं सुन रहा हूँ. So I love this You're song. in the mood. I'm in the mood. I'm in Atif's mood. So let's see that. Thank you so much You're for your time. You welcome. look stunning by Thank the way. you. Thank you. So guys, we have the amazing Abdullah. Abdullah, how are you? I'm good. I'm good. We are here today to celebrate Atif firstly. Yeah. So any favorite song of Atif? I mean, you know, I'm biased because I did a song with him. Yeah. Which obviously, I think that's my Coke favorite Studio. Atif song. Yes. I love this song. Thank you. But obviously, I mean, he has so many iconic songs over the years. I mean, there's too many to name. But like, he's just, you know, he's somebody that we've all kind of grown up with as an artist, and like we've all been listening to him and just, you know, absorbing his music as like, you know. And there's so many songs that's nostalgia for us to be very honest. Of course, yeah, yeah. Like बड़े हुए हम सुनते Yeah. And we've seen Atif become Atif Aslam. Absolutely, yeah. So it's stunning, and I'm glad to see you here. I'm excited for the performance. Are you? Yeah. Very. I can't wait to see what he's been working Any on. specific song कि आज आप सुनना चाहते हो? Oh my God! I mean, so I was मेरा तो talking to him. simple है, दिल दिया गल्ला. I really want to hear. Oh yeah, that's a great one. I mean, I actually like his older work more, like just when he used to do like really proper rock and stuff, you know. Like I was mentioning 12 Baje, Hangami Halat, you know, all those songs that are kind of really, where he gets a little bit grungy. I love that side of him. So yeah, we'll see. Thank you so much for your time. Thank and you. See you guys. We have the amazing Bilal Ashari here with us. Sir, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आप कैसे हैं? मैं प्यारा सूरत इंसान है तो सही. है तो सही. आपके साथ karaoke. I feel I remember we had a last conversation on the premiere of Maula Jad. Yeah. And it was stunning. I loved the movie. We keep on watching it again and again. और ये बात अब तारीफ पुरानी हो गई है कि तारीफ कितनी करें. But when are we expecting something new from you? Hopefully soon. I'm not working on a movie yet. Okay. I will get to it sooner or later. कुछ मैं एक और प्रोजेक्ट कर रहा हूँ जिसकी डिटेल्स अनकरीब आएंगी. अभी नहीं ऐसा नहीं है कि वो कोई बट आई जस्ट जनरली प्रेफर कि थोड़ा वेट करूँ जब वो चीज़ रेडी हो जाए, मैच्योर हो जाए, फिर यू नो प्रेजेंट इट टू द वर्ल्ड एंड देन. Well, I'm super excited. Whatever it is, we're gonna surely love it. Atif Aslam, today is Atif's day. Any one song that you love, Atif? So yeah, I was just answering that question earlier, and I said obviously it has to be Aadat because that's where it all began. But ये थोड़ा generic सा वो answer है. सबने Aadat का है, to be very honest. तो फिर कोई वजह तो है, but I also like the song. It's called Kap Kapi, which is a slower song. तो वो is one of my early जो उसके फेवरेट्स हैं उनमें से. बट या सो मेनी के डिसाइड करना मुश्किल हो जाता है. मैंने यही अब आई वाज टॉकिंग टू माय ऑडियंस एंड आई वाज सेइंग द सेम थिंग कि वी हैव सो मच, हर सिचुएशन में वी हैव हर्ड आतिफ. शादी, ब्याह, ब्रेकअप, पैच अप, जो भी है. सो आतिफ हैज बीन द पार्ट ऑफ आवर फैमिली, आवर लाइव्स ऑल दिस इयर्स. सो दैट्स वेरी डिफिकल्ट टू आंसर. Thank you so much for your time. Pleasure talking to you. Thank you. So guys, we have Hassan here. हेलो एवरीवन. रोशान की शादी थी, वो नहीं आया. आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो मैं ही आ गया. फर्ज नहीं निभा रहे हैं आप. तुम्हें एक बंदा तो पहुंचे, रोशान नहीं आ सका. तो आतिफ असलम के लिए शादी भी छोड़ या आतिफ असलम के लिए कुछ नहीं. So हसन, आतिफ का Good, you look so nice. आतिफ के सारे मेरे मैं भी जहाँ से आ रहा था तो वहाँ पे उन्होंने 2004 से जर्नी स्टार्ट की हुई थी और मैं देख रहा था कि 2004 से 2016 तक सारे ही हिट्स हैं और मेरे सारे फेवरेट्स हैं. लेकिन एक गाना जो
दिल से दिल वो दिल मेरा से दिल दिया गल्ला है आई आप थिंक कौन सा कि वो जो स्टार्ट ऑफ किया था 2004 में हिज फर्स्ट एल्बम, आई थिंक मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन था हूँ और मेरे लिए वो एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन भी रही है मेरे खुद के म्यूज़िक में आने के लिए। अमेजिंग अमेजिंग सो आज परफॉर्म भी कर रहे हैं आज आतिफ आई एम सुपर एक्साइटेड सेम हियर खत्म हो ताकि वो शुरू हम हो। लोग शो देखे जाके और जाके एंजॉय करें। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। And so guys, we have Essen here. Essen, first of all, today is Atif's Day. Yeah. मैं इसको आतिफ का दिन बोल रहा हूँ आज है। because it is Atif's Yes. Day. Any specific song that you love the most? उस एंटायर कह रही है हाँ, entire career. आदत ये क्यों सारे आदत पे रखे हुए यार? I really want to Yeah, know. that's how I started up being a fan. Yeah. So मुझे याद है मैं सीडी लेने गया था खरीद खुद. आदत was it? Yeah, after that I like his Kadi Yavo in Coke Studio. I love that song as well. Nice. Thank you so much. And Pleasure. are you excited for the show inside? Yeah, I am. I'm super excited, guys. मैं जल्दी wrap up करना चाहता हूँ ताकि No, actually I did the music for the show. Oh! Yeah, I'm a producer. Amazing, amazing. Yeah, So no. I can't wait to listen to the new song. Yeah, I've seen it, so yeah, it's amazing. I'm excited. I'm excited. Yeah, I Thank know. you so I much. hope you have fun. I will. We have Adnan Ghazi here, as usual, dapper with everything. It's Thank you. Stunning, by the way. Thank you. आतिफ असलम का दिन है आज. कौन सा फेवरेट गाना है आतिफ का? मैंने तो सब डायरेक्ट किए हैं हाय हाय. तो मेरे सभी फेवरेट हैं. I've been very blessed to be part of this amazing project, and we've traveled all around the world actually shooting it. So I can't wait for everybody to actually see it. I'm so excited and I can't wait. I just want to wrap up this thing really early and go inside and Yes, please. enjoy. You have to enjoy it. The first song that you're going to see, we shot it in New Zealand, and it's my favorite song. I'm gonna wait for it. Thank and you. आपने अगर किया है तो कमाल ही किया Thank होगा. you. Obviously, I Thank know you. him and his work is amazing. Thank you. so much. Thank Adnan. you. Thank you. for talking. So we have Ubair here, and this amazing designer / stylist Abhi, because he has styled all this Borderless World album. Most of it. Most of the looks. Most of the things. Other people too. Yeah. कैसे हैं आप? Alhamdulillah, आप बताएं क्या हाल है? You're looking handsome. पे कभी ये शशके, ये लड़के आ रहे हैं, ये कपड़े पहने हुए, अब यहाँ पे हर जगह है माशाल्लाह. So उनकी मेहरबानी है. क्या कहना चाहेंगे? सर ये एक ऐसी चीज़ है जिसका हम सब बड़ा देर से इंतजार करते थे. बहुत देर से इंतजार कर बहुत रहे देर से हैं इंतजार थे और this is something कि all of his fans they're gonna love it. We have heard it. They're gonna love it. Each and every song. Oh, this is going to be a new high. 7 साल बाद एल्बम आ रहा है. So Yes, it's yes, a long time for us It to is, wait. it is. For Atif to. And you know we have the only living legend. You know, Ah, he's that's the true. only superstar. Yeah. That's true. So That's true. you guys gonna love it, inshallah. So I'm really gonna see. Especially I'm excited for your work as well. Thank you so much. You've So been so guys, nice. let's check him out. Let's check the thing out really soon. And उनसे हम लेंगे फिर कि क्या कहेंगे. So I can't guarantee you कि अच्छा बुरा जो भी बोलेंगे That's all मैं right. आपको सारे reviews दूंगा. That's all. ठीक है? That's all. Thank you so much. Thank you so much. Thank God you. bless Thank you. you. We have the I think मैं इंट्रोडक्शन डिफरेंट करना चाहता हूँ इस दफ़ा because I love your songs. Thank you. I love the way you perform. Thank you. The energy that you know we get from you as your audience. I think it's phenomenal. Thank you. World music icon. नाम लेने की जरूरत नहीं थी by the way because he is वो क्या है राहुल नाम तो सुना होगा नहीं. वो वाला सीन है. Sir, firstly I saw you on BCW as well. You performed for Wiz Studio One and it was amazing. Like I could sense the energy from वर्ल्ड में Thank you. Thank you. Rockstar. सबके लिए मैम सारे रॉक स्टार हैं जितने भी आए हैं. आज मैं सबको रॉकस्टार कहूँगा. आज सारे म्यूजिशियन से आए हैं, म्यूजिशियन आए आज हुए हैं. सारे कमेंट्स में कहेंगे सर आपके पास कोई और अल्फाज नहीं थे. नहीं, सब सारे म्यूजिशियन सारे रॉक स्टार हैं और सबसे बड़ा रॉक स्टार जिनके हम इवेंट पे हैं. आतिफ डे बाय द वे. सो आतिफ का कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के बहुत करीब है. यार एक नहीं है यार ये एक आपने बताना होगा. नहीं है एक नहीं है दिल की अकेला करें ना. Great opportunity. बहुत सारे हैं यार बहुत सारे हैं. बट फर्स्ट सॉन्ग दैट यू फेल इन लव विद. ऑब्वियसली इट वाज आदत फॉर एवरीवन. और फिर उसके बाद फिर कहानी रुकती नहीं है, फिर चलती जाती है और वो पूरी एल्बम और उसके बाद फिर दूरी और मतलब हम लोग तो आतिफ भाई को सुन के हमने सीखा है. हमने म्यूजिक मैंने तो इसलिए म्यूजिक शुरू किया था कि अच्छा मैंने आदत सुना था and there was a guy who was playing. आगे वाले पीछे. You are in danger. आगे पीछे हो जाए. उमर भी हमारे नहीं रुके आजे. Okay.
So there was a guy on TV, you know, आतिफ असलम, और वो आदत गाना गा रहा हो, और मतलब वो तो ऑनेस्टली मैं अब ये भी मैं वो आतिफ को मतलब हमने तो सोचा भी नहीं था कि अच्छा आतिफ का इवेंट भी अटेंड करेंगे हम एग्जैक्टली नॉस्टैल्जिया As a fan. जाता है बिकॉज़ आई वाज अ फैन ऑफ सुरक्षेत्र, वो अच्छा। रियलिटी शो जो होता था where he was the captain of Pakistan team. The way he had that like one liners, apart from his music also, he is an amazing personality also. He's an icon for Pakistan. That's true for sure. Thank you so much. You're welcome, and जी। I'm excited for the show inside. अच्छा शो भी अंदर हाँ। ये मुझे आपको नहीं पता था? नहीं मुझे नहीं That was the performances. ग्रेट यार